Good evening, Adesha. Adesha, good evening. Can you hear me? Hello. Children, can you hear me? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Okay, let's begin the show. Yesterday's class, what we were discussing what we had discussed in the last class, we were discussing pair of tangent equations concept. Am I correct? Am I correct, children? Sir. Hello. Okay. And Adisha, as per your concern, yesterday, the day before yesterday, you was not in a position to open the notes. I just uploaded that. So whenever you have any kind of issue, something like that, you just drop a message to me. Don't be keep quiet and sorry, no, I'm not able to open the notes. If at all you have that case, please drop a message so that I also just come to know that yes, notes is not able to open the students. Students are not able to open the notes, so I can upload it again. Okay, people. Yes, sir. So it is an announcement to every one of you. ठीक है तो one second. Chord of contact, equation of pair of tangents we have discussed, and today we'll talk about equation of normal. ठीक है, equation of normal. Can you all see the screen? Hello. Yes, sir. Equation of normal to the parabola. Okay, y square is equal to 4x parabola. Okay, so guys, equation of the normal at basically at the point whenever he is not giving a point to you, then you take a point called 280 square comma 280 point. So how did we get this point? I just already told you how can we derive this coordinates. Okay people, basically very simple. मैंने ज़्यादा आपको क्या बोलता हूँ ये, I'm not going to just prove everything here. We can just prove it. Equation of the normal, right? Equation of the normal. I'm like, how can you prove this? Y minus y1 is equal to mn x minus x1. This is the equation of the normal formula. What is mn here? Slope of the normal. Correct? Slope of the normal. How can you get slope of the normal? If you know slope of the tangent, you can find out slope of the normal very easily. Correct? So that is how you can just find out by using the equation I have given to you. Okay. Basically beta, look at this here. You can just derive it. Basically it's not a big deal at all. देखो ये मेरा ये parabola होगा, ठीक है? This is a parabola I have. Okay, and मेरा ये tangent होगा, ठीक है? One second people, ये tangent draw करने में थोड़ा ये नहीं, this is tangent. Okay, this is my tangent. It should touch the parabola somewhere here like this. Please try to understand that. If I draw a perpendicular line to the tangent, वो होता है मेरा, what is that? What is that? This is normal. Am I correct? Yes or no? This is my normal. Do you agree with my point or not, people? Yes. देखो ये point of contact है ना, this point of contact, ध्यान से सुनिए. This point is what? 80 square comma 280 point. ठीक है, अगर पॉइंट कुछ नहीं दिया है तो पॉइंट क्या मानेंगे हम लोग? 80 स्क्वायर कमा 280 ऑन अ पैराबोला. ठीक है, ओके पीपल. यस, सो वन सेकेंड. हाँ, नेक्स्ट हमने क्या करें? लुक एट दिस. दिस इज अ पॉइंट. दिस व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस? दिस इज अ पैराबोला y square is equal to 4ax parabola. Correct? Now how can we derive this? How can we derive this? Tell me.
How can we derive this? कोई idea? Very simple, very simple. You can just tell me very easily here. But equation of the normal in different forms. In different forms. What are the forms I told you? What are the forms I told you, beta? Equation of the normal in parametric form. I mean, for every, for every form, like, equation of the tangent in parametric form, slope form, and point form. Three forms I just taught you. Now, similarly here in parametric form, what could it be? What it could be? Look at this here. Basically, this is what the equation I'll be using to derive all the forms. They go in parametric form. In metric form. In parametric form, if at all he has, he has not given a point, then you have to take a point as 80 square comma 280. ठीक है? So मुझे पता है, I'm just finding equation of the normal here. So in parametric form, I know equation of the what you call the tangent or not. We know that. Derive तो कर लेंगे, कोई problem. We know that the equation of tangent in parametric form. In parametric form. What is that? What was that? Ty is equal to x plus 80 square. मैंने ये बताया था आपको. रिवाइज नोट आपको पता चलेगा ये. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म. हाँ देखो, इसको क्या करेंगे, x माइनस टी वाई प्लस 80 square is equal to 0. Okay, this is what I got. This is what equation of the tangent in parametric form. I need slope of, equation of the normal. For finding equation of the normal, what I need, but I need slope of the normal. How do you find out slope of the normal? First let us find out slope of the tangent, mt. Slope of the tangent क्या होगा इधर बताओ, minus a by b. तो minus a. What is a here? A coefficient is 1 by b. What is b coefficient? Minus t. So 1 by t is my slope of the tangent. Am I correct or not, people? Then slope of the normal क्या होगा? Slope of the normal is going to be what? Minus t. Correct or not? Since we know that m1 m2 is equal to minus 1. So m1 is 1 by 2. m2 पता नहीं है मुझे, तो m2 कैसे और फाइंड आउट करूंगा मैंने? minus t. ठीक है? As per this condition. Why we are using this condition? Why? Because a tangent and normal both are perpendicular to each other. Correct? Yes or no, people? Hope it is clear. मैंने ज़्यादा will not waste much time here. Okay? Hope it is clear. Yes or no, people? Then Sir. Equation of the normal at point called 80 square comma 280. Okay, what is the formula? Y minus y1. Y1 is what here? 280. Mn, slope of the normal is what? T. X minus x1. What is x1 here? This is 80 square is my x1. तो just इसको simplify करो बस. Y minus 280 minus tx plus 80 cube. So y plus tx is equal to 280 plus 80 cube. This is the equation of the normal in what? In parametric form. ठीक है? Getting my point? Hello people. This is my equation of the tangent in parametric form. This is my equation of the normal in parametric form. Hope it is clear with you all. Why we are using equation of the tangent in parametric form to derive equation of the normal in parametric form. Why we are using? If I use this, so I can use slope of the tangent. If I know slope of the tangent, I can find out slope of the normal. If I know slope of the normal, after that nothing. By using this point and slope of the normal, I can find out equation of the normal in parametric form very simply. Hope it is clear. Hope it is clear, beta. Yes or no, people? Yes or no? Sir, ये तो मुझे पता चल गया. In parametric form, what did we find? In parametric form, we found normal equation to the parabola. We found normal equation to the parabola in what? Which form? In parametric form. Agar same normal equation, if I find out in slope form, how can I find out in slope form? Tell me. Slope form. For that I need what? What I need, beta? मुझे चाहिए slope equation of the normal. We know that. फिर से tangent के we rely upon again equation of the tangent in slope form. We know that the
equation of the tangent of the parabola in what form? Slope form. What was that? Is y is equal to mx plus a by m. मैंने बताया था आपको, c के जगह में हम लोग लिखेंगे a by m. ठीक है, दिस इज द फ्रॉम दिस मैंने क्या करूंगा, फिर से देखो, आई विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. हाँ, equation of the then the equation of the, guys, for finding this I told you the at point, let's say that at point a by m square comma 2a by m, this is a point. You write here the equation of the, let us write here the equation of the normal at p called a by m square comma 2a by m, equation of the normal in slope form at slope form at p is equal to this one. So what would be that? But what is the slope here? Slope of the tangent is what? What is the slope of the tangent? Minus m, correct? This is the slope of the tangent. Then slope of the normal is going to be what? Slope of the normal is what? Hello people, slope of the normal क्या हो जाएगा? हेलो, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो ये इसको लिख लीजिए mx minus y plus a by m is equal to 0. It is a line equation. Slope of the tangent is what? Minus a by b formula, minus a by b, तो m हो जाएगा. I'm sorry, slope of the tangent is what? M, correct? This is my slope of the tangent, m. Then slope of the normal is what? Minus 1 by m, correct? Yes or no people? कोई doubt? Any doubt? Any No, doubts? Slope of the tangent is equal to m minus cancel होके मुझे मिलेगा m. Okay. So here equation of the normal, so y minus y1, what is y1? A by, I mean 2a by m, m into slope of the m into x minus x1. तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको नहीं, इवन यू डोंट सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम. ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन किस फॉर्म? स्लोप फॉर्म. सर व्हाई यू आर कॉलिंग दिस एज अ स्लोप फॉर्म, व्हाई यू कॉलिंग दैट एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म? हियर आई एम यूजिंग अ वर्ड, आई मीन लेटर कॉल्ड m. m denotes slope, so I'm calling this as a slope form. I'm using a letter called t here. देखो मैं t, कहाँ भी t दिखेगा तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. ऐसा नहीं है कि सर विच फॉर्म आई नीड टू यूज फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कुछ नहीं है कि एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स यू हैव टू यूज. दोनों टेंजेंट इक्वेशन है, दोनों नॉर्मल इक्वेशन है. देखो this one and this one both are normal equation only to a parabola. So then which one I should use for finding the normal equation? कुछ भी यूज कर सकते हो. अगर स्लोप दिया है तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, अगर कुछ पॉइंट दिया है तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है उसमें, कुछ भी यूज कर सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू यूज दैट ओनली. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ कैन वी यूज दिस एंड ऑल. ओके पीपल, होप इट इज क्लियर, होप इट इज क्लियर. देखो कितना कितना आसान का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में. देखो मैंने बताऊंगा आपको. find the equation of the normal at point 1 comma 2 given on the parabola. Equation the parabola y square is equal to 4x. देखो वेरी सिंपल बेटा, आपको एक सर which one I should use here, which formula I should use here, which formula I should use here, tell me. कुछ फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, देखो कुछ फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के भी लगा, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x माइनस x1. सर मुझे अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कहां से मिलेगा? फ्रॉम वेयर आई वुड गेट स्लोप ऑफ द नॉर्मल हियर? सो बेटा दिस इज माय कर्व. पैराबोला इज अ कर्व और नॉट? टेल मी, इट्स अ कर्व और नॉट? हेलो पीपल, डू यू एग्री विद माय पॉइंट गाइस? अरे यार एक मिनट, पैराबोला इज अ कर्व और नॉट?
गाइस yes or no रेस्पॉन्ड तो कर लीजिए प्लीज. गाइस आर यू हियर? Disha, Srikar, are you able to understand? Parabola is a curve. So now for finding slope of the normal, let us find the slope of the tangent. How can you find out slope of the tangent? dy by dx. dy by dx is going to be my slope of the tangent. Okay, slope of the tangent at the point what 1 comma 2. This gives me slope of the tangent at 1. I mean dy by dx at 1 comma 2 gives me slope of the tangent. मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है तो फ्रॉम दिस कैन आई कांट आई फाइंड आउट स्लोप ऑफ द नॉर्मल? टेल मी, बताओ मुझे. पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी. कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ से? वेरी सिंपल का चीज है बेटा. मुझे कभी भी देखो बेटा, कभी भी देखो, कभी भी कुछ भी अब नेक्स्ट इन नेक्स्ट ईयर आई मीन क्लास 12 CBSE student, especially CBSE students, you people will be getting the chapter called applications of derivatives. Applications of derivatives. In that particular chapter, again, you will be using the concept which you are talking about now, equation of the normal and equation of the tangent. Okay, equation of the normal to a particular curve. Okay, getting my point? ये सब हमने जो parabola, ellipse, circle, these all are curves. You can see, again use the same condition whichever I'm just talking about now. Getting my point? सेम कंडीशन का मतलब देखो, ये कंडीशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये नॉर्मल के लिए है. अगर टेंजेंट के लिए पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? एम टी लिखेंगे बस. हाउ कैन आई फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट हियर? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट इज नथिंग बट dy by dx. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स. दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड. यस और नो? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? पीपल आर हियर और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो गाइस. Yes, sir. dy by dx is what now? dy by dx is what? dy by dx y square is equal to 4a, I mean 4x given. What is the dy by dx of this particular curve? Derivative of y square is 2y into inner function y dash is equal to 4. Am I correct? So y dash is equal to what? 4 by 2y. Am I correct or not? Yes or no? हाँ, देखो ऐसा नहीं, 2 1s 2 2s, you write like this, 2 1 2 2s. So dy by dx, y dash is equal to what now? 2 by y. dy by dx, we found that, but dy by dx at point given, dy by dx at certain point is what? Derivative, right? Hello people. dy by dx at certain point is slope of the tangent. Yes or no? This is dy by dx. Now y dash at 1 comma 2 is equal to slope of the tangent. What is that? 2 by, what is y here? 2 or not? This is x value बेटा, ये हो गया मेरा y value. देखो 2 2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया y के जगह में, तो क्या मिला मुझे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1 हियर. कोई डाउट? हाँ. नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा देन? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज व्हाट? हेलो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस बेटा -1. यस और नो? बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैंने एक बात बताऊंगा. इफ यू नो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल. देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट -2 है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस विद द पॉजिटिव साइन, तो 1/2. ठीक है. सो अगर इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा. ठीक है. हाँ, मैंने अभी ये शॉर्टकट है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेट्स से 2, देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज व्हाट? इधर प्लस आया तो इधर माइनस आएगा विद रेसिप्रोकल. वेरी सिंपल. करेक्ट. नाउ आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. स्लोप ऑफ द टेंजेंट यू हैव, लेट्स से दैट 1/2 you have plus 1/2, right? Slope of the normal would be -2 with reciprocal and -2. समझ में आ रहा है? People are able to understand? Slope of the normal is what? Either plus 1/2. So reciprocal of this is what? 2 with a negative sign. इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा तो प्लस आएगा. ये ध्यान. हाउ डू यू गेट दैट? कॉमन सेंस. m1 m2 इज इक्वल टू -1 कंडीशन से मिलता है सब. ठीक है. मैंने आपको हर बार, लेकिन each and every time we will not apply that condition and just find out mt क्या आता है, mn क्या होता है. ठीक है. mt तो पता होगा, mt पता होगा तो mn कहाँ से पता करेंगे हम लोग? हर बार तो हमने लाइक वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, राइट? मेरा -1 है, इधर पॉजिटिव है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल व्हाट विल बी हैपन? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल नाउ? -1. करेक्ट. हाँ, -1 मुझे मिल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल. अभी देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट y - y1. दिस इज माय x1 बेटा, this is my y1. ठीक है. So 2 is equal, slope of the normal is -1. I got x minus, देखो कहाँ कितना इजी सवाल है. देखो x plus y minus 3 is equal to 0. This is my slope of the, I mean find equation of the normal. Any doubts? Any doubt guys? बताओ मुझे. So what did you understand from this? हमने without using parametric form, without using slope
form also, still you can find out equation of the normal and equation of the tangent to a particular curve. समझ में आ रहा है? This is a basic सवाल. देखो whatever I taught here बेटा, whatever I taught, all this stuff मैंने जो भी बताया ना, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है? This is extra. This is what your answer. This is what required to your question. ठीक है? Getting my point? Getting my point or not? हाँ, people try to understand everywhere. देखो, for finding slope of the tangent, what you need to do? What you need to do for finding slope of the tangent? Beta, I have a point here. Let's say that I have given a point called -1, 3, and I have given a curve called x square is equal to 4a. I mean 4 y something. Then I'm asking you to find out slope of the tangent. I mean equation of the tangent at this point क्या होता है? मुझे बताओ पहले slope of the tangent क्या होता है? What is slope of the tangent here? How do you find out? Slope of the tangent is what? How do you find out? Hello guys. Slope of the tangent, how do you find out? Derivative करेंगे इसको, इसका derivative slope of the tangent हो जाएगा. Derivative at this point. What is the derivative of this? Tell me. 2x is equal to 4 into y dash. Am I correct? Am I correct or not? Hello people, are you able to understand? ऐसा नहीं पता चलेगा आपको तो ऐसा कर लो इसको, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/4 कॉमन, ठीक है, एंड इनटू एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज y डैश? y डैश इज इक्वल टू 2x/4. 2 1s 2 2s. y डैश इज इक्वल टू व्हाट? x/2. करेक्ट? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स पीपल? y डैश ये हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द स्लोप इज गोइंग टू बी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट y डैश at what point I have given to you? -1, 3. Am I correct? -1, 3, right? Yes. Slope of the tangent is going to be what? -1/2 or not? Yes or no? Any doubts? कोई doubt इधर? Hello. Slope of the tangent is what? Slope of the tangent क्या होता है? Derivative of this function at this point is slope of the tangent. What did you learn from the derivatives lesson? This is what we have learned. Am I correct? Yes or no? बेटा डेरिवेटिव का मतलब होता है dy/dx is nothing but dy/dx at certain point x1, y1 is nothing but slope of the tangent. This is the definition of the derivative. समझ में आ रहा है आपको? Hope it is clear with everyone. मुझे slope of the tangent पता चल गया तो slope of the normal is easy to find out. I'll be equating with the perpendicularity condition and finding out slope of the normal. Since tangent and normal both are perpendicular to each other. Am I correct or not? Hope it is clear beta. I can't explain more than this. I explained multiple times this concept. आपको पता चल रहा होगा. I hope everyone is understanding this one. If at all कोई भी किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत sir I'm not able to understand. I'm not able to understand that particular concept. You can ask me without hesitation. You can ask me. Definitely will be clearing that. Okay people. Any doubt? Niyati, any doubt? Adesha, any doubt? आदेशा एनी डाउट? नियति, दिशा, कोई डाउट? परफेक्ट. थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, मैसेज मत कीजिए, सो दैट इट विल बी a very interactive session. If you just texting in a chat box, what happens is I can't concentrate on chat box sometimes. Like we are like going with a very interesting and interesting and keen discussion. So if you just text me, if you text me in the chat box, you have to open it and see. It is the kind of disturbance to the class. So we are in a flow. Let us be in the flow itself. So try to talk in the class. Every one of you try to, when I just asking with your name, when I was just calling you with your name, please try to respond to the particular question which I'm asking to you, right? Hope it is clear. Okay, so now we will solve a question beta. We will solve a question which has been asked in JEE 2020. देखो tangent का question, normal का question, very pretty easy and important. Y is equal to mx plus 4 is a tangent. What is it? Is a tangent to both the parabolas. Y square is equal to 4ax and x square is equal to 2by. Then what is the value of b? This is a question which has been asked in JEE 2020.
ठीक है, सो ऑप्शन ए -64, ऑप्शन बी -32, ऑप्शन सी -128, ऑप्शन डी 16 गिवन। गाइस हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस क्वेश्चन? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे आइडियाज चाहिए, आइडिया। श्रीकर, कैन यू जस्ट गिव मी एन आइडिया, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो इजी, इजी, इट्स वेरी इजी। श्रीकर, आर यू हियर? श्रीकर, आर यू हियर और नॉट श्रीकर? नो। नियति, आर यू हियर? नियति? I'm there, sir. Yes. Can you suggest, like, can you tell me how can we solve this question? Dekho, just try to approach. Sir, this is the way we can solve it. Might be, that might be the idea. That might be the idea, sir. Can we approach in that way? You suggest any idea, whatever you have. It's not, there is no compulsion that, आपको answer बताना ही चाहिए. Yes, in fact, you have to tell the answer, but yes, try to give the answer. Are you getting any idea, Niyati? If no, sir, I'm not getting. If yes, sir, can we approach in that way? Yes. I'm not getting, sir. Okay, fine. Look at this here. Y is equal to mx plus 4 is a tangent to the parabolas, this one and this one. Okay, so here he has given two parabolas. Okay, and this is a tangent to this parabola and this parabola. Okay, then value of b kya hota hai idhar? That is a question here. What is the value of b? Very good question. Dekho, we know that, we know, but he is talking about tangent. We know the slope of, equation of the tangent is what? Equation of the tangent is what? Just now I told, y is equal to mx plus a by m. Okay, what is a here? What is a here? From this I'll be finding out a. In fact, this is not 4ax, it should be 4x. Okay, what is a value? What is a value? 4a is equal to 4. If I compare the given parabola with y square equal to 4ax, then 4a is equal to what? 4 or not? 4 will get cancelled. A value is what? 1 here. So very simple. A value is 1 here. So look at this here now. Can I substitute here now? Then y is equal to mx plus 1 by m. Yes or no? Am I correct? This is the equation of the tangent. And as per the question given, according to the question, look at this. According to the question, y is equal to mx plus 4 is the tangent. Is the tangent. ठीक है, देखो. Now what is the m value is going to be? 1/4. Very good, very very good बेटा, very good. 1/4. देखो ये भी tangent है, ये भी tangent है, तो मुझे compare करना पड़ेगा ना. Yes or no? This is also tangent, this is also tangent. So if I equate both the things, so मुझे क्या मिलेगा? देखो, equate both the things. mx plus 1 by m and mx plus 4. mx cancel हो गया, मुझे क्या मिलेगा? m का value is what? What is m value? 1/4. This is my slope. Correct? Any doubt? Any doubts now? Any doubts? देखो ये हो गया मेरा. वेरी 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 गुड सवाल. देखो ध्यान से सुनिए, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. फोकस 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 फोकस. लुक एट दिस. मुझे क्या मिल गया अभी? m का वैल्यू मिल गया मुझे. सो एज पर द गिवन क्वेश्चन, एज पर द गिवन क्वेश्चन, tangent equation is what? Then the tangent equation is what? Y is equal to mx plus 4 given. Then y is equal to m का वैल्यू तो मुझे पता चल गया था. What is m value? 1/4. सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो x/4 plus 4. ठीक है, करेक्ट? यस सर, नो? ये मिल गया मेरा. व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट.
बेटा ध्यान से सुनिए, दिस इज अ टेंजेंट टू विच पैराबोला, दिस पैराबोला आल्सो, ऐसा नो। मुझे चाहिए बी का वैल्यू, बी का वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैंने कैसा फाइंड आउट करूंगा सर? we need to find out b value here. So far whatever we have called, so far whatever we have solved, अभी तक मुझे जो भी कैलकुलेशन करना पड़ा, like देखो whatever the calculation I have made so far in this question, which is nothing related to b, from the calculation which I have done I can't find out b straight away. हाँ अभी क्या करना है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इधर। देखो this is a tangent equation I got, this is a tangent is tangent to x square is equal to 2by also, am I correct? 2by दिया है ना, हाँ x square is equal to 2by। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अभी देखो बेटा, बेटा ये होगा मेरे, देखो एक दिस इज माय पैराबोला, ठीक है, दिस इज अ लाइन गिवन y इज इक्वल mx प्लस 4, ठीक है। सो एज वी नो दैट बेटा दिस इज अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला गिवन, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ व्हाट ही हैज गिवन, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला, तो x स्क्वायर जो पॉजिटिव एक्सिस लाइक दिस, ठीक है, ये इसका भी टेंजेंट है। Okay, the given line is tangent to this parabola also, this line is tangent to this parabola and this line is tangent to this parabola also, yes or no? Which parabola is this? Y, I mean x square is equal to 4ay, which parabola it was? X square is equal to, which parabola is this? X square is equal, y square is equal to 4x, okay। ये जो tangent is common to both the parabolas, that is what he has given। तो क्या होगा अभी देखो, बताओ मुझे बेटा। हाँ अभी क्या करेंगे, देखो y का वैल्यू मुझे मिला है, तो दिस y कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर, यस सर नो? अरे भाई ये तो टेंजेंट है किसका, इसका भी है, तो मुझे ये y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, यस सर नो? मैं करेक्ट, यस सर नो? यस सर नो बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? देखो आपको b फाइंड आउट करना चाहिए, b फाइंड आउट करना चाहिए, मैंने बताया था आपको, ध्यान से सुनिए। दिस इज अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला आल्सो, मैंने क्या करूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b इनटू y, व्हाट इज y हियर, x by 4 plus 4, so I am getting the equation in terms of x, sir you are getting equation in terms of x and b, then कहां से b find out करोगे, tell me? 4x square, from where you find out the value of b now, look at this, x square, let's multiply this, 2bx plus 16 by 4, correct? So 2bx plus 16 minus 4x square, am I correct? Or else you write like this, is equal to 4x square। तो 4x square मैंने एक आइडिया बताया था, what is that, tell me? बेटा I'm asking you to find out b value here, how can I find out? आपको डिस्क्रिमिनेंट करूंगा, मैंने क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बस। सर डिस्क्रिमिनेंट कहां से आ गया फिर इधर से, from where you got discriminant, beta I told you beta, a line getting touch, a tangent equation getting touch to the parabola, or else a line is touching to the parabola at one point, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो उसको उसी को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट, है मैं करेक्ट? लाइक दिस माय टेंजेंट, सर नो? हाँ तो मैंने बताया था आपको, देखो अरे वन सेकंड, a line touches to the parabola at one point, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू करना चाहिए 0। अगर a line touches the parabola at distinct point, इधर इधर है, I have distinct roots, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ग्रेटर देन 0 होगा, करेक्ट? हाँ a line is not touching, no real root, मतलब लेस देन 0, खत्म। समझ रहे हो आप कहानी? guys are able to understand or not? Here it is a tangent which is nothing but it is touching to parabola at one point, अगर वन पॉइंट है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 एज पर दिस कंडीशन। तो मैंने अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर, व्हाट इज बी हियर, बताओ मुझे? बी स्क्वायर इज व्हाट, इधर 2bx, so can I take can we take 2 common here beta, can we take 2 common? So 2x square minus bx minus 8 is equal to 0, can I do? Yes। अभी देखो कंपेयर करो, व्हाट इज a वैल्यू इज 2, b वैल्यू इज व्हाट, माइनस b, c वैल्यू इज व्हाट, माइनस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी स्टेप। So minus b whole square minus 4 into a is 2, c is minus 8 equal to 0. So won't you get b value from this? A b square square plus 128 b. 4 to the 8.
तो b का वैल्यू मुझे मिलेगा 1 सेकंड पीपल हियर 1 सेकंड b स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज c का वैल्यू सर? c का वैल्यू 8 है ना, करेक्ट? 1 सेकंड आई थिंक, कहाँ तो भी कैलकुलेशन, अरे लुक एट दिस बेटा, इधर देखो मैंने क्या करा है, इधर 2 इंटू बी तो 4 इंटू 4 तो 1 सेकंड, वी मेड ए कैलकुलेशन मिस्टेक हियर। देखो कहाँ, देखो इधर देखो, एक्स स्क्वायर 2b x or else you put first x plus 16 by 4, let us do like this, x square is equal to 2bx plus 32b इधर, करेक्ट, एंड 4x स्क्वायर, ये होगा मेरा करेक्ट इक्वेशन। गाइस नो इज टेलिंग एनीथिंग, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो इधर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने। गाइस कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट, बट यू नो वी मिस्ड 2, we just we missed multiplying 2 here and we wrote 16 there, ओके। सो थोड़ा इसको देख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 32b इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या होता है इधर, और else you take 2 common, it's very looking big, right? So 2x square minus bx minus 16b is equal to 0, करेक्ट। तो मैंने क्या करूंगा अभी, a का वैल्यू, व्हाट इज a वैल्यू 2, b वैल्यूज माइनस b, c वैल्यूज माइनस 16b, तो एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ। देखो c का वैल्यू में थोड़ा चेंज आ गएगा, बस c का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज c हियर, माइनस 16b, तो b स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 16h is 128, b is equal to 0, 128, b is equal to 0, perfect। तो b कॉमन, b plus 128 is equal to 0, तो b value is what, b can't be equal to 0 and b is equal to minus 128 is the answer, this is my answer, yes or no, yes or no, yes or no people। इधर देखो मैंने, ये आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये b को क्या कर रहा हूँ मैं, इधर ढकेल दे रहा हूँ बस, तो b plus 128 is equal to 0, तो b का वैल्यू हो गया मेरा 128। सो b का वैल्यू 128 ऑप्शन है कि नहीं देखेंगे अभी, देखो बड़े मजाक से सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा, समझ रहे हो आप? एनी डाउट पीपल? गाइस वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, विद इंटेंस वी आर लर्निंग एवरीथिंग विद नीट मैनर। देखो दिस इज अ 2020 क्वेश्चन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैड टू राइट एवरी स्टेप, अदरवाइज देखो अगर यू आर राइटिंग, यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, क्या करेंगे अब, ये सब लगने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट m वैल्यू 1/4, need not write all this stuff, everything you should you know think everything in a mind itself, ये वाला ये सब वाला आप क्या करना चाहिए, माइंड में करना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली यू जस्ट राइट द इक्वेशन y इज इक्वल mx प्लस, इसको लिख दो, 1 सेकंड, इसको लिख दो, फिर इसको कंपेयर कीजिए तो m का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, एंड ही हैज गिवन दैट m का वैल्यू आई सब्स्टिट्यूटेड बैक, so he has given that this is also tangent to this parabola, तो I substituted there and discriminant I found out, I got b value minus 128, कितना सिंपल है देखो। guys when to use discriminant, whenever he is talking about a tangent, अगर tangent I mean a line touches the parabola at 2 points, मतलब discriminant greater than 0 करना है, a line not touching to the parabola मतलब discriminant less than 0 करना है। most of the cases बेटा, most of the cases